Good morning and welcome, students. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, class 6, you are ready for the class? Great. So, we continue the chapter number 4. What is the name of our chapter? The first cities. The first cities. So, beta, in a previous class, we have already read about Indus Valley civilization. So, just recall करते हैं थोड़ा सा. So, have you got that Indus Valley civilization on the bank of Indus River in India? Okay. And they two are the first discovery of early cities in India. It's a subcontinent made by the Rai Bahadur Dayaram Saini in 1921. Basically, beta, he discovered the ruin and ancient city of Harappa. And the another archaeologist who? Yes, R.D. Banerjee. R.D. Banerjee discovered the another ruin site that is a 400 kilometers downstream by the Indus River. The site located in Larkana district of Sindh, now presently in where? Pakistan. And what is the name of that city? It is known as the Mohenjo-daro. So beta, to continue to this chapter, in today's class we are reading about the city architecture. What we are just study about it, city architecture, that the city, the Mohenjo-daro as well as the Harappa civilization, how they are planning their city, उनका architecture कैसा था, कैसे लोग रहते थे, how they are living, what is the way of their living of their. So in this we can start with the city architecture, town planning. Obviously you are also living a home, आप अपने घर में रहते हो, and in this area you can see the, now we can talk about the town planning. So cities of these civilizations show the people have good knowledge of town planning. As you think that कि उस ज़माने में भी लोग किस तरीके से रहते थे, so they have a good knowledge. And कैसे पता चला that is a good knowledge? We have found some places. हमें ऐसी places मिले जहाँ पर हमने ये देखा कि what kind of town planning they have. So most cities were divided into two parts. It is very important to understand, beta. The city are divided into two parts. The one part is, first is the western part. The city was built on a raised ground, यानी कि two parts थे. First on the raised ground, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई पर जो था, that is a ground, और archaeologist called him citadel. क्या कहते हैं उसे? Citadel. उस upper area को, upper part को क्या कहा गया? Citadel. Repeat after me. The western part of the city built on a raised mean ऊंचे ground पर जो था, that is called a citadel. Many big buildings are found here. Where? On citadel. So many big buildings, granaries मतलब जहाँ पर अनाज रखते हैं, assembly means area, or a town hall, these etc are found on the citadel area. Listen बच्चे, I have also marked there was a question in your quick revision, describe citadel. So beta, I am marking the question here, I am marking the answer here. The western part of the built raised ground, that is and archaeologists called it citadel. So answer number 1, and on the page number 29. So I am marking here, so don't worry at all, answers मैंने book में ही mark करे हुए हैं. Got it? आपको ये answers you can do in your notebook. So the historian views that the administration work were carried from this part, यानी कि जितना administration work होता था, they can thought in the this part. It was built in a huge brick platform, यानी कि बहुत बड़ा area, where? Citadel में बहुत बड़ा area था. And these are why they are making in the, अब थोड़ा ऊंचा क्यों बनाया हुआ था? Because they thought that कि वो किससे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजर ऑफ फ्लड से,
because of all the civilization are sitting on located on the bank of the river के पास थे तो कभी भी फ्लड आ सकता है. सो इसी से बचने के लिए सिटाडेल वाला एरिया ऊपर ही बनाया गया था. सो इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल मे बी टेकिंग शेल्टर इन अ citadel. So citadel is surrounded by huge wall. Huge means very big. Huge wall से surround किया हुआ था citadel को. Historians believe that, historians means who study the history or our past. So historian believe that people by a ruling class means those who are powerful, those who are rich, they can live in that area. Which area? Citadel में. The person who have rich, who have powerful, they can live at a citadel area. And the another one is a lower town. So lower town located in the east. Basically citadel कहाँ था? West part में था. So the local town or was located in the east part. Common people live in this area. Who live in the low area? Common people. So beta, the another question of this is here. It starts from this, many big buildings are there, and the answer finishes here, page number 29, answer number 2. So now we are just talking about the streets. The town planners is this time had made straight road. बेटा did you think that कि आज से हम 4000 years पहले की बात कर रहे हैं, and they have a planning area. So streets are very nice. स्ट्रेट रोड्स थे, क्रॉसिंग एंड द राइट एंगल से डिवाइडेड थे. जैसे अभी आप जाते हैं स्ट्रेट में स्ट्रीट होती है, दैट स्ट्रीट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में दे आर डिवाइडेड. इट इज़ वेरी सिमिलर टू मॉडर्न टाउन डिज़ाइन. इट इज़ अभी नाउ यू आर जस्ट गोइंग इन द चंडीगढ़ और जयपुर. जैसे इन टुडेज डेट चंडीगढ़ और जयपुर प्लान्ड सिटी कहे जाते हैं, सेम एज दैट 1000 ऑफ ईयर्स पहले ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस में लोग इसी तरीके से रहते थे. नाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग. सो हाउसेज वर बिल्डिंग मेड वर द ब्रिक एंड मड. ब्रिक्स और मड के बने होते थे. एंड सम आर 2 स्टोरीड हाउस. 2 स्टोरीड मतलब वन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. दे हैव ऑल्सो लाइक दिस बेटा. हैव यू सीन दिस पिक्चर? ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. सो बेसिकली बेटा हाउसेज आर वर बिल्ट इन द 2 साइड रोड. दोनों साइड रोड होता था. एंड दे हैव अ थिक वॉल ऑल्सो. बट डोर्स डिड नॉट ओपन इन द मेन स्ट्रीट बट इट into the side lane. आपको पता है why the people are not opening the door? आपका घर कहाँ पे है? मेन रोड की तरफ खुलता है, लेकिन on the हड़प्पन साइड they did not open in the main road. मेन रोड में क्यों नहीं खुलता था? क्योंकि मेन रोड से जाने वाली गंदगी घरों में ना घुसे, इसीलिए they did not opening the main, वो साइड लेन में खोलते थे. The bigger houses has country yard, यानी कि बड़े हाउस में एक कंट्री यार्ड होता था. सेपरेट किचन, सेपरेट बाथरूम. हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स. सभी हाउसेस में अपने खुद के कुएं होते थे. थिंक दैट बेटा यू आर लिविंग इन 21st century and now we are just talking about 1000 or 4000 years ago. 4000 साल पुरानी बात कर रहे हैं. हाउ दे हैव अ माइंड. कितने मॉडर्न रहे होंगे, कितना उनका आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि दे आर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग कितनी मॉडर्न और कितनी एडवांस होगी. सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जहाँ से घर की नालियाँ निकलती हैं. सो हैव यू सीन दिस पिक्चर? येस. सो टाउन प्लानर्स हैज़ डिवाइज्ड अ वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम. दे ड्रेन्स वर सो लेड आउट वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज, यानी कि पानी बाथरूम से एंड किचन से निकलने वाला पानी दे कैन इन टू द नैरो ड्रेन्स विच ज्वाइन इन द लार्जर ड्रेन. अभी भी ऐसा ही होता है कि छोटी नालियाँ जाके लार्जर ड्रेन से जाकर मिलती हैं. ड्रेन्स आर ग्रेजुअली स्लोप्स एंश्योर फ्लो ऑफ वाटर. मैनी प्लेसेस ड्रेन्स आर कवर्ड. बेटा स्टिल think that how can they are sense of hygiene, how they have a sense of cleanliness, कि वो उस तरीके से इंस्पेक्शन होता था. इंस्पेक्शन मीन्स टाइम टू टाइम सम पीपल आर चेकिंग देयर कि वो ठीक से ड्रेनेज काम कर रहे हैं या नहीं. दे हैव अ मेन होल ऑल्सो. सो हैव यू सीन दिस? सो दे हैव अ कवर्ड
covered drainage system, inspection holes which show that they had a sense of hygiene, ensure cleanliness. This is the answer number 3 of page number 29 question. See this is have some drainage system. छोटी लाइन आके किससे, बड़ी लाइन से जुड़ रही है. So beta, it is very helpful to see this picture, and if you have any issue तो you can go through the Google and write these type of things. तो वहाँ पर लिखना और ये सारी चीज़ें आपको सामने आएगी. It will help you. So now we are come to the Great Bath. Have you seen this? The Great Bath, the most important and impressive structure found in the citadel in Mohenjo-daro, that is the Great Bath. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, Great Bath with resembles the modern day swimming pool, like swimming pool जैसा था. See this beta, this is the Great Bath. So it is made up of brick, mortar and tar, which shows that a great engineering skills. बेटा see this, 4000 years ago पहले बना हुआ थिंग आज भी आपको ऐसा दिखता है. So it was plastered by the bitumen, एक तरीके से चारकोल जैसा होता है bitumen, with the prevented water from seeping away. It has a large number of rooms. Have you seen this? This is the large number of rooms here. Historians are view that people must be bathing in this on religious occasion, like कुछ ऐसे religious occasion पे, जैसे कि when we are going to the हरिद्वार, हम क्या करते हैं, पवित्र पानी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं. So in a some religious or special occasion, people have come here to take a bath. Okay, now the last one is granaries. I think your mother is also storing food. आपकी मम्मी भी ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, डेली तो मार्केट से नहीं लाती ना. सो दैट टाइम इज ऑल्सो पीपल आर स्टोरिंग द ग्रेन्स. ग्रेनरीज आर ऑल्सो फाउंड इन द सिटेडल ऑफ नियरली ऑल द सिविलाइजेशन. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, सिटेडल में दिखती हैं. दीज वर प्रोबेबली यूज टू स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस. वट इज़ इट कॉल्ड? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस. It is likely that were used during period when there was a no crop. Why people are storing the grains? जब कभी क्रॉप नहीं हो, ख़राब हो जाए, सो उस समय ये क्रॉप काम आ सके. So in today's class we have already read about many things. We have already read this town planning, streets, houses and building, drainage system, the Great Bath and granaries. These are the 4 question, 1 2 3 4, and this answer is also there. Beta, watch the full video. It is very important to watch full video. Read the PDF very carefully, and then you will ask the question in a query. And if you have any problem in a particular word, so you can see in the dictionary. If you don't have dictionary, so you can just type on Google particular word and the meaning. So the Google will help you to find the meaning of particular word. Thank you and so much, students.